Sir, you will be sitting here. You can't afraid here. Power of this device. Yes. Yes. Achal, Ashmita, all set? As we embark on empowerment is not giving voice to the voiceless, but creating spaces where every voice can be heard. This is the vision that drives Project Samavesh, a joint initiative by the Center for Disability Research and Training, Kirori Mal College and SCORE Foundation. Both CDRT and SCORE Foundation have been at the forefront of fostering inclusion and accessibility, working tirelessly to create equal opportunities for persons with disability. Today we proudly present Project Samavesh towards inclusion and empowerment. The project aims to promote inclusion for blind and visually impaired individuals. This initiative will provide in-person and remote guidance, expert-led training sessions, and access to essential resources. Truly a step towards inclusive and empowered tomorrow. Helen Keller once said, "Alone we can do so little, but together we can do so much." And today, as we all gather here, these words come alive. Because this event is all about togetherness, about inclusion, and about building a future where no one is left behind. Good afternoon, everyone. I, Achal, with Ashmita, on behalf of Center for Disability Training, Kirori Mal College and SCORE Foundation, extend a warm and a heartfelt welcome to our respected principal, our esteemed chief guest, our faculty members, dear students, and all the dignitaries present here. Our society, CDRT, work with one vision, and that is to build a future where no one is left behind. We are committed to creating opportunity, support system, and awareness for a person with disability. And today, with the launch of Project Samavesh, we are taking another step forward. This project will open door for a blind and visually impaired student by providing them guidance, training, and access to essential resources. And definitely, this is not just an event, but a beginning of a movement. To begin our event, I would now like to invite our respected principal, Professor Dinesh Khattar, whose vision and support has guided us throughout in our endeavors, to address and welcome the gathering. May I request sir to kindly come on the stage. Very good afternoon. Respected
chief guest who will be shortly joining online, I suppose, Shri Rajesh Agarwalji. He's already there. That's great. So his sir is already there with us online. My dear colleagues, organizers and students. So today as we gather for the launch of Project Samavesh, my heart is filled with both pride and humility. Pride that our college and its partners are taking a historic step towards inclusion for blind and visually impaired students. Humility, because I know that what we inaugurate today is not just a help desk, but a lifeline of hope for so many young dreams. The Samavesh Eyeway Helpdesk will provide guidance, training, and resources. But beyond all of this, it will provide what every human being longs for, a sense of dignity, belonging, and the assurance that you are not alone. We are truly blessed to have with us online Shri Rajesh Agarwalji, IAS Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities. Sir, your very presence here tells our students that the nation stands with them, that their struggles are seen, and that their aspirations matter. I wish to deeply acknowledge Shri George Abrahamji, CEO of SCORE Foundation, whose project Eyeway has already lit countless lamps of courage, and Professor Someshwar Satiji, coordinator of CDRT, whose personal dedication has turned compassion into action. Without both of you, today's program would not have been possible. Dear friends, inclusion is not a favor, it is a right. As Mahatma Gandhi said, the true measure of any society can be found in how it treats its most vulnerable members. If even one student feels left out, our education remains incomplete. If even one dream is denied, our nation's progress remains unfulfilled. Helen Keller, who herself lived in darkness but gave light to the world and said, "Alone we can do so little too. Together we can do so much." So Project Samavesh is that spirit of togetherness, where the sighted and the visually impaired walk hand in hand, building a future that has no walls of separation. Honorable Prime Minister has often reminded us, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. And this project is a living example of that philosophy, inclusion, that is not just spoken of in policies, but lived in classrooms, corridors, and campuses. So to my dear students, I want to say this from my heart. Disability is not inability. The world may put limits on your sight, but no one can ever limit your vision, your courage, your determination. This initiative is not just to support you, it is to tell you that we believe in you, we are with you, and we will walk every step of the journey together. The great poet Rabindranath Tagore captured this spirit beautifully. He said, "Faith is the bird that feels the light when the dawn is still dark." And for our visually impaired students, Samavesh is that dawn, a dawn of faith, freedom, and opportunity. So with these words, I once again welcome Shri Rajesh Agarwalji and extend my warmest congratulations. My congratulations to Shri George Abrahamji, Professor Someshwar Sati, and their teams who have made this dream a reality. Let us remember, when we open the doors of opportunity to one, we brighten the future of all. Thank you. Thanks a lot.
sir, for your encouraging words. Now, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Sri Rajesh Agarwal, Secretary of the Department of Empowerment of Persons with Disability. Sir, it was an honor to have you with us online in this insightful session. Your presence connecting with us online today is an inspiration for all of us, and we feel truly honored and grateful that you could join us for this special occasion. Now, I would like you, sir, to speak some words with all of us. Can you hear me properly? Yes, sir. Okay, good. So, good afternoon, everyone. Of different kinds. Sorry, can you hear me properly? Yes. So now we can hear you. I can carry on. Okay. So when now many people ask me if there is only one thing which I would like to do as secretary of this department, what would it be? My answer is education, education, education. Because that actually results in dignity, that results in livelihood, and maybe a brutal thing to say, but it can make a difference between भीख मांगने वाले हाथ versus नौकरियां देने वाले हाथ. That's the transformation which can occur with proper education of a blind child or a visually impaired child. So I am happy that universities and colleges are now really promoting one, they are taking in children with special needs, children with disabilities, and they are striving for inclusive education. Now I am quite openly actually saying in conferences that okay, blind schools, deaf schools, ID children's schools, they are needed at certain stage for certain students. But beyond a point, children should move into inclusive schools. Otherwise, that results in ghettoization kind of thing. So, we want a blind student or a deaf student or a cognitively impaired student or a locomotor disability student to really interact with other children, enjoy the same inclusive schools and so on. Secondly, many of us, if we are not really seeing the potential of people with disabilities, somehow we have a mental image कि ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. So it's very important that we showcase role models to everyone in society. So even parents get encouraged that okay, my children are special needs, but if these are the good examples, my children can also aspire to reach these levels. I met a guy named Divyashu. I met him multiple times. He's from Pune. He's totally blind. And first time he met me 6-7 months ago, he said, "Sir, I will take you paragliding." He said, "I will do paragliding and you tag on to me and we'll go paragliding." So I asked him that you can't see, so how can you really paraglide? He said, "If a bat can fly, I can also fly." And he said, "I can take you for scuba diving also." So he runs an adventure sports company actually taking people, blind people as well as non-blind people for these kind of adventure sports. So you can't otherwise imagine a blind person doing paragliding or scuba diving. So this year a girl named Pallavi, in her 12th class CBSE exam, she said, "I will take exam on desktop laptop myself without help of a scribe." And she scored 94% marks. So we are promoting this technology also in a big way because that's an enabler.
has actually tried, he was one of the earliest users of Meta latest glasses. And if you wear those Meta glasses, they have all of us who can see also. But if a blind person wears them, the goggles have a small little camera in them, a small mic in them, and small speakers near the ears. And if a blind person says, read out this newspaper for me, or read out this PPT going on for me. So basically, Meta acts as eyes for the blind person. We are trying to promote STEM education, science education, maths education for blind kids and visual. Because this today's focus is on VI, so I am talking about VI. But a lot of great things are happening for education and skilling of deaf children, children with cognitive impairments, and so on. So it's very essential that the teachers and the fellow students, they are sensitized to the potential possibilities. So that you do not look at your VI, whether faculty or student, as a subpar human being. So if something is missing, something else gets enhanced. So everyone has their own abilities and set of disabilities, every one of us. So that's why it's essential that we showcase the potential things, we showcase best of our people, and at higher education you are into higher college now, that thing goes away by this time. But when we were all small children, we did not, we were not that much, in fact, sensitized or civilized. So as small children, the meanness can be much more. So at school level, in society, if we don't sensitize our children towards the needs of the other children's special needs, the bullying happens too often. So I have to talk about this even at this stage, but bullying at schools is obviously much larger. And all of us have indulged in bullying of children who were not like us. So that is very essential for children with special needs, that they don't get bullied at any stage in life. And even in college, that they are treated as equal students, that they participate with all of other students as equals, whether it's a sports activity or going to canteen or going for an outing. So it's essential that other students take along their colleagues who have some kind of impairment. So I hope the college inculcates those kind of values also. One more point, the placement cells, the companies which come to your campus or pushing children into postgrad and other avenues. So there also you need role models and really model employers to come into your campus and really talk to these kids. So that keeps them moral up that even after doing our education, the world is wide open to us. So I hope we work together on those kind of things also. Now the course, whether I at CCTV, I see CCTV of Western sitting there. So, and then now other courts, high courts, Supreme Court, we have been very liberal in our judgments and we have been pushing the education system also to take in new people. Supreme Court has been even saying in NEET exams also that children and students with disabilities can become doctors also. And Supreme Court also said that let us not reduce a human being to limits. Even our job mapping and who can do which course, we say कि अगर आपके एक आँख है तो ये कोर्स कर सकते हो, दो आँख है तो ये कोर्स कर सकते हो, एक आँख नहीं है तो ये कोर्स नहीं कर सकते हो. So we should look at potential things which the person can do, rather than looking at things which he or she cannot do. So
that's again my request to all the academia that I do get complaints from students कि सर मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ, ये नहीं करने दिया, मैं zoology करना चाहता हूँ, टीचर ने डांट दिया, प्रिंसिपल ने डांट दिया कि एडमिशन नहीं दिया, कैसे कैसे कर सकते हो, दिखता नहीं तो आप ये तो कैसे करोगे, वहाँ तो सारा डायग्राम्स का खेल है, तो but the functionalities now, that's why I mentioned that with the assistive technologies, a lot of things can happen, and when you meet people like the Vashu, who says if a bat can fly, I can fly. तो मैंने लास्ट वीक के कॉन्फ्रेंस में बोला कि दिव्यांशु का ब्लड का डीएनए का टेस्ट करते हैं, इसमें बैड ब्लड तो नहीं है. The point is the possibilities are limitless, many which we cannot imagine, क्योंकि हमने वैसे लोग देखे ही नहीं है लाइफ. So I am lucky to be meeting lot of people who are doing things which I cannot imagine that we do the same things they can even do those things. We know about 18th century, 19th century pianists, the best ones who had lost their hearing, who had become deaf. Even after they were composing the most loved tunes even today. So we know about Wright brothers and many others who were dyslexic and who designed things first time. So the potential is endless, and I'm very happy that we are having these kind of discussions. And I really wanted to come to the college today, but a lot of meetings here. So definitely I will take time over within next few days to really visit your college also and physically with some of you. So again, my best wishes to everyone, including college team and sport team and others, to organize this, and my best wishes to everyone. Thank you so much. And if there are 1-2 questions, I can take those questions also before me. So, but I will keep my PC on so that immediately I will keep on listening to you and watching you. But if there are 1-2 questions, I can take them right now. If anybody has any question, you can ask. Yes, sir, we have one. Good afternoon, sir. I am Amrita Verma from Miranda House. My question is that I know that technology is our requirement, but brain is our need. We can't imagine our life without that, and the basic need is not available for us. So, as you are working in several departments, so I only want to inquire and I want to know that what are the steps that are being taken and that will be taken to develop braille techniques and other things in our college universities, because this is the harsh truth that we are facing. Thank you. The voice was not very clear. I could not hear the question fully, but I guess it is about the use of braille. Is it so? Yeah, Yes, the sir. question is, what are the steps taken by the government to promote braille in colleges? Is that correct? Because that is our identity and we need that. They say it's their identity, it is the identity of blind people and they need it, they say. We need to promote that in any form. Okay. Okay, this is actually very interesting debate within the community also. Is braille really needed, or is it an outdated technology? Within blind community, I have met people who are absolutely respected in the field, who are earning greatly, but who say we do not know braille. We just came up with studying on audio books, and we use our speech and we use computers very well, and we don't need braille. There is another group which says that for learning stuff, 4 things are important, and obviously I am talking to academia that teachers know much more than me. Reading and writing, listening and speaking. So, a blind person cannot read
also for scientific diagrams also. So basically touch-based system. And writing also then correspondingly means using the stylus and those slates to, and then the mirror image thing, etc. So that entire thing comes. So in the ministry, we have taken a stand that in initial classes till 4th, 5th, etc. Yes, we will promote Braille also, we will distribute Braille books also to students, and in fact we have added tactile books to the whole portfolio under the Braille scheme, and a lot of touch-based scientific instruments. And frankly, when you go to college, etc., and if you are more comfortable with reading through Braille rather than audio books, obviously refresher Braille displays, then probably one should go for that. They cost about 40,000 at the moment. We are trying to bring down the price to 25,000, 30,000, and we have brought them in ADIP scheme also, so that we can start giving those. So again, giving Braille books for college, they will become actually very voluminous. एक किताब के बदले एक बोरे टाइप ही काम हो जाएगा कि पूरा ब्रेल बुक्स का देना पड़ेगा. A refresher braille RFDs, refresher braille displays actually opens up the entire world to you, entire internet to you, millions of books to you. So we are putting more and more books into the BRF format, braille friendly format on the net. Now a lot of AI is changing a lot of stuff, so artificial intelligence, a lot of tools have come. Even if the book is not proper accessible PDF, they will push at least 90% of it into your Braille refresher display systems. But I will strongly encourage all blind and BI students to learn computers very well. Now, in fact, in our blind school, Dehradun, for second, third students, they are taking all their exams on computers rather than on Braille only. We are teaching them Braille also, but we are teaching them computers also. I very strongly encourage students to start using audio books, to be very proficient on JAWS software, NVDA software, other kind of software. Now 11 Lab Reader is fantastic, it uses very good AI. So, yeah, but as you grow bigger, go into bigger classes, you will have very few books on Braille. You have to use technology and use refresher displays, read the PDFs through those. But even better, listen to books, and many students I know, they listen to books at 3x the speed. तो YouTube वीडियो मैं 1 घंटे में देखता हूँ, कुछ क्लाइंट लोगों को 3x स्पीड पे 20 मिनट में समझ जाते हैं पूरा. So that really increases your efficiency. So yeah, that's my very detailed answer, but that's it. Sir, can I interrupt, please? Yeah, one more question, please. Somebody else asked Somebody question. else. It's the same. This is the same word. It's the same. Yeah, no, we can't have a debate just now because we can't solve the problem across the table. Can somebody else ask a question, please, if there is anybody else? Let somebody else also. Do we have any other question? Yes, one more question, and then our deputy CCPD Ambasthat is there. Later on in the day, he can answer, he can meet people and answer anything. Yes, one more question, please. There are no more questions, we'll come back. All right. Thank you very much, Dr. Agarwal. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you, sir, for your insightful words and joining us. Please give him a big round of applause. Now, as we embark on this journey of empowerment and inclusion, it is only fitting that we begin with the traditional lamp lighting ceremony, symbolizing knowledge, wisdom, and enlightenment. Light dissipates darkness and represents progress, clarity, and hope. It is in the spirit that we invite our principal sir for this ceremonial lamp, and with Mr. George Abraham and Samavesh Helpdesk sir. Please welcome him. Everybody give a round of applause for them.
Thank you, sir. ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अभी तो शुरुआत है। थैंक यू सर। With the ceremonial lamp now lit, symbolizing knowledge and new beginnings, we move forward to learn more about the foundation that has made today's program possible. Moving forward, I would like to invite Tamanna and Ashmi from CDRT to give us an overview of the vision, objectives, and key initiatives of CDRT. May I kindly request both of you to take the stage and enlighten us with an introduction to the work and impact of CDRT. Good afternoon, everyone. I'm Ashmi from CDRT, and I hope you've been enjoying this celebration of inclusion and diversity. I'm here to give you all a quick overview about the Center for Disability Research and Training. Disability studies today is a rapidly emerging interdisciplinary field of intellectual inquiry, rich with untapped research possibilities. These research possibilities need to be adequately explored and comprehensively conceptualized if we are to move towards establishing the cherished goal of a truly inclusive society. More importantly, there is also a simultaneous need to create systemic institutional structures to support and facilitate the inclusion of students with disability into the intellectual mainstream and to advise other institutions of higher learning on how to do so. It is also imperative to spread awareness about disability in society at large and change the way that the non-disabled world perceives and responds to disabled individuals. For this reason, in 2021, Kirori Mal College established the Center for Disability Research and Training. Formally launched in September of 2021,
This event made headlines in national dailies. This was hardly surprising. So CDRT was the first center of its kind to be established in a college in India and present a 360-degree approach to the establishment of an inclusive educational mainstream society based on equality and social justice. Our objectives are as follows. 1. To promote and popularize disability studies as a legitimate field of intellectual inquiry within the Indian academia, particularly among undergraduate and postgraduate students across the country. 2. To broaden the knowledge base of the discipline through commented research. 3. To use disability studies as a stratagem to foster inclusion. 4. To spread awareness about disability within and beyond the campus and form a culture of disability allyship in society. 5. To create a level playing field for students with disability on campus and provide them with a wholesome educational experience, and to assist other colleges and universities to set up similar institutions in their colleges. Over to you, Tamanna. In pursuit of the above goals, we carry out a wide range of activities. As you can see, in a short span of 4 years, we have explored 3 main domains of activities ranging from academic, sensitization, and inclusive education. So this is a flow chart representing our journey from 2021 to till date. So it is an updated version, and we have a lot of activities from academic, sensitization, and inclusive education program. So, in a short span of 4 years, we have explored 3 main domains of activities, ranging from academic, sensitization, and inclusive education. Accordingly, the center has 3 distinct yet overlapping departments. First, the Anusandhan, the academic wing. With its units, Jigyasa, the Disability Academy Forum, Paricharcha, Disability Discussion Forum, and Anveshan, the Disability Research Forum, where we conduct national and international conferences, student-led discussions, lecture series, certificate courses, and academic workshops. The principal objective of this unit is to trigger a conversation around disability within the Indian academia, particularly within the undergraduate and postgraduate classrooms. It is primarily concerned with promoting disability studies as a legitimate field of academic inquiry and working out ways to introduce disability studies within mainstream university curriculum. Our second wing is social awareness wing, the Samvedan. The units of Samvedan are Jagriti, Disability Sensitization Forum, Abhivyakti, the Performing Arts Forum, Bandhutu, the Disability Ally Forum. The wing organizes disability awareness drives, simulation workshops, sensitization campaigns, screening of accessible films with sign language and audio descriptions, disability-centered theatre workshops, and musical and dance performances. A last wing is Samavesh, as the name of the event. It is the inclusive education program with its unit called Paramarsh, the counseling services, Samarthan, human and technological support services, Prasekshan, skill development and training unit, Sulabh, department that creates accessible study material, and Ajivika, disability placement cell. Under the inclusive education program, we carry out counseling services, distribution of assistive devices, offer computer and mobility training programs, and also convert study material into accessible formats to facilitate the full inclusion of students with disability within the educational mainstream. So, the center also counsels other educational institutions on how to achieve this goal under its outreach program called Sankalp. Not surprisingly, to this effect, 15 institutions across the country have signed MOUs with us. We are covering the length and breadth of India, from St. Xavier's College in Ahmedabad and Mumbai in west to Bhawanipur College in Kolkata, Cotton University in Guwahati, Mizoram University in the east to Kashmir University in the north.
Not surprisingly, Kirori Mal College is known across the country for its egalitarian academic ethos and inclusive pedagogical practices. We at Kirori Mal will leave no stone unturned in the cause of creating a better world without prejudice and discrimination of any kind. After all, we firmly believe that labels are for jars, not people. Thank you everyone for joining us today. I hope you have a great day ahead. Thank you very much, Ashwin and Tamanna, for such an insightful and comprehensive presentation. Hello everyone, I'm Shweta and I will be taking you through the rest of the event. On the behalf of Score Foundation, it gives me immense pleasure to welcome you all in this event. Now, I would like to invite Professor Someshwar Sati, Professor in the Department of English at Kirori Mal College, Coordinator at the Center for Disability Research and Training and Chairperson of IDSC, to introduce us all to the project Samavesh. Over to you. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Well, it's nice to see that you are all live and kicking. But let me start laying out the objective of the project that the Score Foundation and the Center for Disability Studies, Disability Research and Training have joined hands for. If I give the sighted people in the audience today a book scripted in Braille, would they be able to read it? Perhaps not. Would then the world call them disabled? Definitely not. Then why? Why is that? Blind people who cannot read print and use Braille instead classified as disabled. Why is that? That people who do the same thing in different ways are branded as deviant and abnormal. Why can't we provide them with an alternative means of doing the same thing that they are used to? Why can't we embrace different modes of being as a manifestation of human diversity and celebrate it as such? I deliberately began my presentation by posing these questions because in these questions I believe lies the essence of our project. These questions, I hope, must have triggered in you a kind of a thought process. A thought process that must have made you realize that there is a reality of disabled and blind existence, and there is, on the other hand, an ideal that society professes. In order to facilitate the full inclusion of blind and visually impaired people into society, we need to map this journey from exclusion, from stigma to inclusion. We all talk about inclusion. The RPD bill lays down in great detail how we can build an inclusive society and even gives legal guarantees for it. It tells us what we should do. But does it tell us how to do it? Telling us
what to do is not good enough. But how to translate what should be done into reality is the real challenge. How can we support this journey from exclusion to inclusion in society is what Project Samavesh attempts to do, particularly in the educational sphere. We blind people generally grow up in a predominantly sighted society where all structures are predominantly scrutined from the perspective of those who can see. The ultimate result is that we are inevitably marginalized. How can we negotiate this process of marginalization within the educational sphere? That is the real question that bothers us. We believe that educational institutions should evolve systemic institutional structures for the full inclusion of blind people into the educational mainstream. And for this reason, we have evolved the project Samavesh, which primarily consists of trying to disseminate information among the blind community about the various available possibilities. That is why we have this Samavesh Eyeway Helpdesk, which shall be functional here in the CDRT room at Kirori Mal College. But this is not all. We also firmly believe that we need to be counseling students on how to move ahead in life. So it is not just a help desk, it is also a counseling forum. What do we do here? Or what do we plan to do here? We plan to profile the students, identify their specific needs, explore their aspirations, and provide them with very customized solutions to realize their dreams and overcome their limitations imposed by society. In addition to this, we, after having profiled a student, identified their specific needs, worked out what their aspirations are, we will prepare them to realize these aspirations through a systematic process of computer and mobility training, through a systematic process of skill enhancement and personality development. Our aim would be to make visually impaired students more prepared for the market and carve out a career for themselves in the world that we live in. So this is our objective, and this is what we are going to do. But we also realize at the same time that the real difficulty that the blind student coming to higher education faces, apart from the lack of systemic institutional structures, is the lack of understanding on the part of their non-disabled peers and teachers and administrators. So under Project Samavesh, we will also try to
embark on disability awareness campaigns, sensitization projects, so that we can actually change the way that the non-disabled world perceives and responds to disability and disabled people. The objective is to change the mindset. दोस्तों, यकीन मानिए, अगर देखने का नजरिया आप बदल देंगे तो नजारा भी बदल जाएगा. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir, for giving us this insightful talk, and I hope that it reached to all of us that what we plan to do with this project. Now I will hand over the mic to Sir George, and he will introduce us to our panel members, and we will move forward to the panel discussion. Should I go down? Yeah, you. Or do you have enough chairs? Yes, yes, yes. We have 2 empty chairs now. Take it up. You said where? Okay, sir. Sir, selling to office call you to the audience. I don't know. Namaskar. Good evening. Namaskar. Namaskar. हमने नज़ारा सुना. सवाल ये है कि प्रॉब्लम हमारे नजर का है या दुनिया का नजरिया का है. सो नजरिया बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? नजरिया बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? कोई जवाब नहीं. जागरूकता. ओके. एनीवे, प्रोफेसर सती हैज वेरी ग्राफिकली, बहुत ही विस्तार से समावेश प्रोजेक्ट के बारे में आपके सामने उनका जो हमारे जो सोच है रखा. तो हम लोग अभी डिजिटल दुनिया, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, एआई की दुनिया में जा रहे हैं. हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि इंडिया विल बी ए डिजिटल इंडिया, और हम सोचते हैं कि हमारे जो दृष्टिबाधित भाई बहन है वो इस डिजिटल इंडिया का भी नागरिक बने या ना बने? बिल्कुल. सो ये मद्देनजर रख के, ये सोच समझ रखते हुए हमने सोचा कि समावेश जो हमारा कार्यक्रम है इसमें आप लोगों को ऐसे इनपुट्स दे ताकि आप लोग भी इस डिजिटल इंडिया, टेक्नोलॉजिकल इंडिया, एआई बेस्ड इंडिया में भी आप लोग शामिल होंगे, योगदान करेंगे और दौड़ेंगे. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ब्रेल को बाहर रखा जाएगा. ब्रेल भी आपका एक हिस्सा होगा, राइट? सो अभी एक पैनल डिस्कशन होगा. हमारे शुरुआत में 6 लोग थे जो पैनल में आना था, तो हम लोग 2 पैनल करने वाले थे, पर प्रशांत वर्मा जी जो आने थे उन्होंने कॉल किया कि उनका कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो नहीं आ पाएंगे. फिर प्रदीप जी जो है वो NIDH का जो डायरेक्टर है, NIEP का जो डायरेक्टर है, वो बीमार है तो आज नहीं आ पाएंगे. तो हम लोग एक ही पैनल करेंगे. एक समस्या ये है कि हमारे पास 3 कुर्सियां हैं, 4 वक्ता है, तो कैसे अकोमोडेट करें? तो हम लोग 3 लोगों को बुलाएंगे स्टेज पे. एक स्पीकर को वैसे भी जल्दी जाना है, घर कहीं जाना है, तो हम जब उसके बाद चौथा स्पीकर को यहाँ बुलाएंगे, राइट? तो आप लोग उससे सहमत हैं? वेरी गुड, वेरी गुड. सो अभी हम लोग मैं स्वागत करता हूँ स्टेज पे मिस्टर प्रवीण प्रकाश अम्बास्ता जी, जो हमारे भारत के डेप्यूटी चीफ कमिश्नर. उनका पहचान परिचय करने से पहले आपने ताली बजाया. तो प्रवीण अम्बास्ता जी कौन है बताइए? वेरी गुड, 100 के 100 मार्क. So he is the Deputy Chief Commissioner, Persons with Disability.
इनके ऑफिस जो है द्वारका में है। और दूसरा स्पीकर है डॉक्टर पंकज कुमार, जो देहरादून से आए हैं, 250 किलोमीटर पार करके इसी कॉन्फ्रेंस पे आए हैं। और इससे पहले मुलाकात मेरा हुआ जब पंकज जी एक स्टूडेंट था। तो पंकज जी आइए। यस सर। एंड तीसरा 2 महिला में एक को मुझे चुनना है, तो पहले हम सरिता जी को बुलाएंगे क्योंकि उनको कहीं जाना है। तो आरती, यू विल टेक द सीट वंस सरिता लीव्स जस्ट नाउ। ओके, सो तीसरा वक्ता हमारे साथ है, ये है सरिता चांद जी, जो INDIA के यू आर द मैनेजिंग डायरेक्टर, द फाउंडर। तो इन लोगों को क्यों बुलाया हमने? क्योंकि ये लोग हमको जो रिसोर्सेस हमारे देश में अवेलेबल है, जो संपत्ति हमारे लिए हमारे लायक अवेलेबल है, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये भाषण नहीं होगा, थोड़ा सवाल जवाब टाइप का होगा, ताकि हम टाइम का भी नजर रख सकते हैं, टाइम पे भी नजर रख सकते हैं, राइट। अगर मेरा हिंदी में कोई चूक हो तो आप लोग माफ करना, क्योंकि मैं केरल का वासी हूँ। अगर आप लैंग्वेज पे ज्यादा एम्फसाइज करेंगे तो फिर मैं मलयालम में बात करने का राइट। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए। एंड पहला हम बात करेंगे सरिता जी, जो मेरे बगल में बैठी है। सरिता जी पिछले कई सालों से दृष्टिबाधित और दिव्यांग लोगों को कॉर्पोरेट इंडिया में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उन कोचिंग कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और कई स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं। और ये भी प्रयास करते हैं कि कॉर्पोरेट इंडिया यानी कि प्राइवेट सेक्टर में लोगों को जॉब दिलाया जाए। तो सरिता जी, पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आप INDIA के माध्यम से क्या क्या काम करते हैं, और दूसरा सवाल ये है कि दृष्टिबाधित लोग अपने करियर्स के बारे में क्या सोच सकते हैं, व्हाट कैन दे एस्पायर फॉर? Thank you, George sir, and thank you everyone for having me. First of all, I am also a Delhi University graduate, so very proud to be back in campus. And see, I am a serial entrepreneur and have been an edtech entrepreneur. INDIA is my third startup. So what we do is, first of all, I want to ask you a question. How many of you want to work with private sector companies? कितने लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं? कितने लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं? ओके, कैन आई नो कि क्या क्या करना चाहते हो आप उस प्राइवेट सेक्टर में, किस तरीके की जॉब्स करना चाहते हो? फाइनेंशियल रिसर्च, ओके, एनीथिंग एल्स? आई विल ऑल्सो टेल यू, मैं भी बताऊंगी कि कौन कौन सी ऑप्शन है, बट मैं फर्स्ट आपसे जानना चाहती हूँ कि what are your career aspirations for yourself? Software engineer. Thank you, software engineering, okay. That's the most lucrative job. इसके बाद मेरे को IIT दिल्ली में ही जाना है, and IIT दिल्ली में जो average CTC of a blind child is around 15 lakhs to 25-30 lakhs for a software engineer. Blind engineers in fact are the best engineers. एक मैं स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। मेरे ब्लाइंड स्टूडेंट थे फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड हमने उन्हें कंपनी में प्लेस कराया था HSBC. What happens when a blind student joins a private sector company? देखिए, you are in the same position where women were 50 साल पहले. कोई वुमन बोर्ड पोजीशन पे नहीं दिखती थी, कोई वुमन सीनियर पोजीशंस पे नहीं दिखती थी, फाउंडर्स का सवाल ही नहीं उठता था। हमारा यही विजन है, एटलीस्ट इन माय लाइफ टाइम, नेक्स्ट 20 years आई होप सो, that at least 1% student should be in board director positions. Why I am so fussy over it? जो ये बच्चा हमारा HSBC में गया, what changed did he bring? सारे के सारे सॉफ्टवेयर, HSBC is an international bank, became accessible for all disabilities. That is the change one guy brought. एक लाइन बच्चा प्राइवेट सेक्टर कंपनी में काम करता है, the entire digital softwares of HSBC, all processes became accessible for all disabilities.
So that's the reason we are so fussy over private sector jobs. Any other thing apart from financial research and software engineering? Teaching grad level or school level, so that me being a person with disability can empower more changes, because this young blood can only make revolution possible in this country. उसके एग्जाम्पल तो सर हमारे पास ऑलरेडी है एंड वी हैव लॉट ऑफ टीचर्स इनफैक्ट हमारे यहाँ भी जो पहले लीड करती थी शी इज अ टीचर टुडे इन वन ऑफ द DU colleges. So teaching is a profession. Thankfully we have enough role models. Anything else? DU में ही टीचर्स हैं. But DU तो government is a government job. Government jobs, absolutely. Private sector is open. In fact, Ashoka University is a private university. They've hired a couple of persons with disability as teachers. Any other ambition or aspiration? Okay, how many of you want to do MBA after this? No. MBA करना चाहेंगे इसके बाद. See, I'll share a very sad story. Government reserved 5% seats for students with disability, but only 2% of them are filled. I'm Ahmedabad, I'm Bangalore, I'm Calcutta. में seats जो disability के लिए reserved हैं, they are vacant because not enough people applied for these jobs. The average CDC which you get in IIM Bangalore or any of these IIMs is around 40 lakhs. 40 lakhs plus you become in a position where you are able to drive change for the community. I'll give you another example. One of the best investment private equity guys. One of the best private equity guys वो होते हैं जो स्टार्टअप्स को फंडिंग प्लेस कराते हैं. उनकी सैलरीज और 7-digit सैलरीज करोड़ के ऊपर सैलरी होती है. Is a blind guy. He was an overall IIM Bangalore topper. Not only in the disability segment, but complete IIM Bangalore में he was the topper. So what our NGO does is we prepare students for private sector jobs. Obviously, at blind school level, we start working on transition from braille to digital literacy. It's like I'm a non-disabled person, but अगर मैं किसी कंपनी में जाके कहूँ कि मुझे सिर्फ नोटबुक में लिखना आता है, मुझे कोई कंपनी जॉब नहीं देगी. जब तक मुझे कंप्यूटर में नहीं लिखना आता है, एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर में मुझे कोई जॉब नहीं देगा. तो सिमिलरली, अगर एक ब्लाइंड बच्चा चाहेगा, wants to become part of the private sector world, first request would be digital literacy. And if you are digitally literate, say for finance की jobs, so we also work with Delhi University में Shahid Sukhdev College of Business Studies, same college, Delhi University. उसमें average salaries of मैं वही बच्चे पे बता रही हूँ, around we have placed students from 5 to 15 lakhs. BM research है इंडिया की बहुत मतलब it's a foreign entity, very good research firm. They hire. Digital marketing, a lot of people have started hiring blind students for content writing jobs. HR analytics, HR recruitment, and we don't place students for less than 5 lakh job. Even if you're a simple graduate, हमारी ambition रहेगी कि whatever professional skill you need. So I just tell you some options. सिर्फ BCom के बाद हमारे पास options हो सकते हैं. हम CA का एग्जाम दे सकते हैं, CPA एग्जाम दे सकते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स कर सकते हैं. BA के बाद हमारे पास ऑप्शंस हो सकती हैं कि हम HR एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, जर्नलिज्म के कोर्सेज कर सकते हैं, लॉ परस्यू कर सकते हैं. सो दीज आर वेरियस कोर्सेज दैट वी प्रोवाइड एट 100% स्कॉलरशिप. आपको सिर्फ Eyeway को बताना है कि ये हमारा एम्बिशन है एंड दे लेट अस नो एंड वी एनरोल इन यू दीज कोर्सेज 100% स्कॉलरशिप. एंड दीज आर कोर्सेज फ्रॉम बेस्ट ऑफ एडटेक इंस्टीट्यूट्स. अगर आप ये अपनी ग्रेजुएशन के साथ करते हो, इट हेल्प्स यू इन प्लेसमेंट्स वेरी गुड. छोटे क्वेश्चन का लंबा जवाब, बट any questions? Yes. Ma'am, my question is how I can contact with Eyeway. दो तरीके हैं. एक तो आप हमारे जो समावेश Eyeway डेस्क जो होगा किरोरी मल कॉलेज की CDRT ऑफिस में, वहाँ आप आ सकते हैं. आपको बाद में बताया जाएगा कि कौन कौन से दिन हम यहाँ पर होंगे. तो आप यहाँ आके अपना you can give your details and we will pass it on to Sarita ji. Second is you can also call us on 8800004334 and give your information saying that you want to get in touch with Indic AI or Sarita Chan ji.
and we will pass on the information. अच्छा, नंबर और QR कोड दिखाया गया है, तो आप नोट कर लीजिएगा. Thank you. Anything more you want to say? Any more questions? शुक्रिया. तो हम लोग सरिता जी को रवाना करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. मैं ये बोलना भूल गया कि 50 साल पहले मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सड़कों से गुजरा था. मैं यहाँ का विद्यार्थी हूँ. मैंने मैथ्स ऑनर्स किया था और MA किया था ऑपरेशंस रिसर्च में. बिफोर आई जॉइंड द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री. और मैं लगभग बचपन से दृष्टिबाधित हूँ. सो मैं आपको ये दिलासा देना चाहता हूँ कि जिंदगी का जो दाव पेच है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सड़कों और कॉरिडोर्स पे सीखा. तो आप लोग भी, मेरा आशा है कि आप भी जिंदगी का दाव पेच इसी यूनिवर्सिटी से सीखेंगे, ताकि आप भी आगे जाके अपना तमन्ना, अपना अभिलाषा, अपना आशा पूरा कर सके, अपने एस्पिरेशंस पूरा कर सके. तो हमारा चौथा स्पीकर जो है, जिनको हमने पहले बुलाया था स्टेज पे, अभी कुर्सी खाली हो गया है. आरती जनाना जी, जो सक्षम के हैं. लगता है कि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है. तालियों का गड़गड़ा. Thank you for coming. Now there are two speakers on my right. दोनों भारत सरकार से हैं. एक आपको कानून के बारे में बताएंगे और दूसरा हमें सरकारी प्रोविजंस, स्कीम्स एंड रिसोर्सेज के बारे में बताएंगे. तो आपको पहले क्या सुनना चाहेंगे, कानून या प्रोविजंस? लॉ. सो इनका आवाज सबसे ज्यादा है, उनका सुना जाएगा. Okay. I will go by the alphabetical order. What comes first, L or R? L. Okay, we go with law. So हमारे बीच में ये ऐसा है कि रिसोर्सेज के बारे में सुन के हम जो किस कानून के दायरे में हम लोग फंक्शन करें वो हम भूल जाएंगे. So let's listen to law first, समझेंगे, and then we'll get to the resources. So हमारे बीच प्रवीण अम्बास्ता जी है. अम्बास्ता, H is after T. अम्बास्ता है, and he is the Deputy Chief Commissioner for Persons with Disability, and he's come all the way from Dwarka. And thank you very much, Praveen ji. And he will talk to us about the legal provisions that the RPWD offers us as students, and he will also talk about some of the other useful provisions that there are in the law which will be useful for us as students, as blind citizens of this country. Over to you, Praveen ji. Thank you very much, sir. Thank you. Professor Sati, Aarti ma'am, George साहब और पंकज जी. Yeah. So before I start talking about the RPWD Act, मैं भी बताना चाहता हूँ, जैसे पहले के दो speakers ने बताया कि they belong to Delhi University. I also have got 2 degrees from Delhi University. I did my LLB from Law Center 1 between 1999 and 2002, and I did my MBA executive program for FMS just across the road from Kirori Mal between 2010 and 13. Currently, I am working as the Deputy Chief Commissioner for Persons with Disabilities. तो ये मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है. इसके अलावा मैंने कुछ कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट भी किए हैं यू के लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक इन द कैंपस. दूसरी बात यह है कि बहुत फख्र के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2006 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल की शुरुआत करी थी, जब देश के शायद किसी और यूनिवर्सिटी में इसकी शुरुआत नहीं हुई थी, जहाँ तक मेरी जानकारी है. तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आप में से किसी ने ये पूछा था कि ब्रेल मटेरियल के बारे में, उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में.
I would request you to contact the Equal Opportunity Cell. I believe they have quite a lot of resources in Braille in Delhi University, तो उनको भी आप approach कीजिए. And then now I will come to my subject, which is the act and the rule, and of course उसके साथ जो allied चीजें हैं मैं थोड़ा बात करने की कोशिश करूँगा. मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपको दूँ तो ये एक्ट आने से पहले भी एक एक्ट था. Anyone? 1995 Act. Yes, thank you very much. Persons with Disabilities, Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation Act. ये एक्ट आया था 1995 के नाम से, लेकिन 1996 में लागू हुआ था. उसके ठीक पहले बीजिंग में इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में चैप्टरल कॉन्फ्रेंसेस हो रहे थे. तो एक चैप्टर जो एशिया पैसिफिक का था उसका कॉन्फ्रेंस बीजिंग में हुआ था 1 से 5 दिसंबर 1992 को. और उस टाइम ये डिसाइड हुआ था कि अगला पूरा डिकेड जो होगा 93 से 2002 का डिकेड will be known as decade of persons with disabilities, right? And also 3rd of December, we all know that comes in December. Every year we celebrate this. So 1995 का जो एक्ट था वो काफी वेलफेयर ओरिएंटेड था. उसमें अगर आप कंट्रोल F करके सर्च करेंगे सब्जेक्ट टू इकोनॉमिक कैपेसिटी, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, तो आपको ये प्रावधान कई जगह मिलेगा. यानी सरकार ने जो कुछ भी दिया सब्जेक्ट टू इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स एंड कैपेसिटी दिया. लेकिन 2006 के एक्ट में काफी सारे अधिकार दिए गए, इसलिए इसका नाम भी है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट. और जब ये एक्ट आया तो ये UNCRPD जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है उसका एम्बॉडीमेंट है. अगर हम RPWD एक्ट को देखेंगे उसका जो प्रीएम्बल है दैट इटसेल्फ सेज दैट दिस एक्ट हैज बीन ब्रॉट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द UNCRPD. और काफी चीजें जो है वो डायरेक्टली वहां से ली गई हैं. ऑफ कोर्स हमारे अपने पार्लियामेंट ने उसको काफी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करी है. 17 चैप्टर्स 102 सेक्शंस में बटा हुआ है. इसके साथ एक शेड्यूल भी है और शेड्यूल में स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज हैं. पहले 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज होते थे, अब 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज हैं. हालांकि आई डू नॉट एग्री विद दिस 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज बिकॉज़ इन सम ऑफ द डिसेबिलिटीज डिफाइंड इन द शेड्यूल दे हैव यूज्ड द वर्ड सच एज, like chronic neurological disorders such as ABC. So that means D, E and F which have not been mentioned can also be included by way of construction. Am I communicating with you? So 21 disabilities by nomenclature and few of them without even specifically being included were given certain rights which is in RPWD Act. And we are here in the temple of education, academia, and therefore it is only appropriate to say if we have to empower anyone, employment is a major source of empowerment, isn't it? है ना? बिना employment के empowerment होना मुश्किल है. Has the National Trust Act been merged with? No, ma'am. But high time it should be reviewed and revised. It's a 1999 Act and still using some of the terms which are now outdated. So National Trust Act, Rehabilitation Council Act, RPWD Act and Mental Health Act. These are 4 major acts on which persons with disabilities depend and take recourse to when they need. Power means what you can access and what you can control. That is your power. Today you are in this auditorium, you can access this auditorium, this is also your power. Not everybody can come to this auditorium, but can you control this? That is being more powerful than just access, right? But access in itself is very important. So empowerment के लिए employment and employment के लिए education and हर एक चीज के लिए accessibility. Without accessibility, like अभी आपने braille की बात करी, वो accessibility के लिए ही कहा. Can you access the material through braille? तो वो important है. Now, what are the rights which are provided in the RPWD Act? So, since we are in a higher educational institution, then I should not speak about section 16 and 17, which are for school education. But since the Act doesn't talk about
And section 17. And if you have any doubt, go back to the preamble, and the preamble talks about, recognition of the evolving capacity of children with disability and giving them equal opportunity. It is mentioned there. So, section 16 and 17 talk about any recognized, government-aided, government-funded education institute shall give education customized to the need of a person with disability. Now, need of a person with disability differ from one person to another person, from one disability type to another disability type. Even within a major disability type, for example, locomotor disability, the need of a person having disability in upper limbs will be different than the need of a person having disability in the lower limbs. A low vision person's need will be different than the need of a blind person. We all agree to that. So therefore, customization is required. Unfortunately, because the visibility, here in this classroom I see a lot of people from the community, but out in the market, out in public places, we do not find as many persons with disabilities out there. Visibility नहीं होने से लोगों का sensitization कम होता है. People like us who work for the government, if they do not have their charter of duty to interact with persons with disabilities, they remain totally aloof throughout their career. 30 years down the line, they have absolutely no awareness about disabilities. And disability is a thing which cuts across all departments of the government of India. Whether education, health, rural development, urban development, housing, any sector you go, you need to have sensitization of disability. Though I was a hostel warden in one of the academic institution, a training and academic institution, and suddenly one day I realized that if my hosteler is a person with hearing impairment, he will not get to know when the restaurant people will come and knock at his door that lunch is ready or dinner is ready. So what to do? And then the solution came in just, very cheap, very inexpensive solution in terms of a flashing light which cost me 250 rupees per room. So 16 rooms in the hostel we made accessible for hearing impaired persons. Very recently in Cochin, in Kerala, from where our dear George sir comes from, a girl with hearing impairment got trapped in a multi-story building which caught fire. Everybody else came out when they heard the siren, but this person couldn't come out, because obviously for the impairment that person couldn't hear the siren. अभी हमारा जब भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमने सभी जगह देखा कि ड्रिल्स चल रहे हैं, सभी ऑडियो बेस्ड हैं. What is there for the other disabilities? So therefore, understanding the need and that we have to assert very politely. We have to assert. You have to do it. मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि when any service provider, any government officer, any teacher, any entrepreneur is required to be sensitive towards the need of persons with disabilities. बहुत ही छोटी सी बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि जैसे जीसस ने कहा था ना, "Oh Lord, forgive them for they know not what they are doing." So please have this in your heart. So anytime you meet a person who is a very insensitive person, not aware about your rights or your needs, then repeat these words and try and educate him politely. Don't come in direct confrontation. This is my humble request to all of you. Please, you also be sensitized towards the broad lack of awareness, sensitivity outside, the community. So then you can at least communicate. If you start on a very aggressive note, the communication will be broken. That is one thing. Okay, now coming back to the Act. So Section 32 talks about 5% reservation, which has already been spoken about in higher education institution. You have scholarships, top class scholarship as well as overseas scholarship program. Try and take benefit of those scholarships when you have to, go for higher education, even abroad. I was speaking with George sir the other day, and we were speaking how important it is to interact with people from the disability community who have gone to Oxford, who have gone to Cambridge, who have gone to foreign institutions. Try and find out how did they go, what was the route they took, what scholarship or what assistance government or the private sector, trusts and NGOs provided to them. But set your eye, firmly on your goal, right? And then
if you find that things are not working out, where to go and file your complaint? This is very important. We keep receiving complaints on various issues in the CCPD. I should have started with giving the introduction of my organization. This is Chief Commissioner for Persons with Disabilities, now which is a 3-member commission, 1 Chief Commissioner and 2 commissioners. Presently we have 1 Chief Commissioner, Rajesh Agrawal sir was speaking to you, the chief guest of this program. He is also officiating as a Chief Commissioner. His main duty is as of the Secretary of the DEPWD. There is 1 Commissioner. We have Dr. S. Govindraj, who was supposed to be here because he couldn't come, so I have been called. You have heard of Dr. S. Govindraj? Anyone? Anyone here who knows Dr. S. Govindraj? Can I see the hand? Anyone knows Dr. S. Govindraj, the Commissioner for Persons with Disabilities, Government of India? No. So he is a person with total loss of sight. He is a blind person, and he rose to the level of Commissioner Disabilities in Government of India, which is a statutory post. He sits in the court, determines cases, issues order. Just today, when I was sitting here actually, he has passed an order, and time permitting I will share with you this very important order in education sector. Yesterday the hearing took place, and today sir has issued the order. He is a blind person. Why I am telling you is that he also runs educational institutions in his native place in Madurai. By dint of his sheer hard work and perseverance, he has reached the level of head of an institution, and which is equivalent to the additional secretary in the Government of India. Okay, so would have been great if he was there. So CCPD looks after grievances, complaints which it receives from persons with disabilities or anyone on filing on behalf of persons with disabilities. But our jurisdiction is only central government and private establishments only for the purpose of accessibility and equal opportunity policy. Equal opportunity policy is mentioned in section 21, and accessibility is mentioned from section 39 to 46 in chapter 8. Different types of accessibility, like general accessibility in section 40, transport accessibility in 41, ICT accessibility in 42, goods and services in section 43, built environment section 44, retrofitting of built environment, section 45, and services in section 46. So this is chapter 8 of the RPWD Act. You should go through, you will understand not only the act, but these accessibility provisions in the act is supported by Rule 15 of the RPWD Rule 2017. Under Rule 15, there are some 19 accessibility standards which have been issued by 19 different departments of the Government of India, which is currently under active review and being monitored by the Honorable Supreme Court. Okay, so just recently, Honorable Secretary Shri Agrawal ji has chaired a meeting on review of these drafts. So this is very soon. This is going to come to provide some guaranteed accessibility rights to persons with disabilities. So everything cannot be guaranteed, but at least some common minimum accessibility standard, like ramp, like an accessible toilet, like reading material, like parking place, customized reception counter. Many of these things have been provided in the draft. So that is currently lift, accessible lift with announcement system. So that is also another type of right. Two very quick questions. Most of the students here are blind and visually impaired. So can you tell them what exactly are the provisions that they can expect under reasonable accommodation? Because they all go to college, they all go to the class, they have, I'm sure they need reasonable accommodation. Many of them may not be knowing what reasonable accommodation is. That's one. Number two, if they need to file a case in the CCPD's office, what is the procedure? Thank you. Thank you for specifying.
So accessibility is something which is required to be given before being asked. Reasonable accommodation cannot be given before being asked because it is prescriptive. It is when somebody approaches you, then you analyze what is the need of this person and accordingly provide that is reasonable accommodation. Okay, so that is a major difference. And I am quoting the Rajiv Raturi judgment from the Honorable Supreme Court, where this has been very clearly mentioned. What is the difference between accessibility and reasonable accommodation? What reasonable accommodation can you expect to the level of which is taken as a normal functioning level? Whatever you need should be reasonable accommodation. Now, what the government provides, for example, so the facility of scribe, the facility of compensatory time, okay, reasonable accommodation. And how do you get that? So, how many of you have seen this? 1st of August, the scribe and examination guidelines have come recently. Anybody has seen that? This is only part 1. This is only the scribe facilities or compensatory time for appearing in a competitive examination. The one for class or regular educational program, that is still yet to come. It is coming. University, school, colleges, that is still being discussed and will come very soon. That will be part 2 and will conclude. So some disabilities, persons with those disabilities, like a person with a blind person, gets it without having to submit any other certificate. A person having disability in upper extremity, they will get without any additional requirement. But for any other disability, they need a certificate from a doctor that the person has a difficulty in writing. Now this again, in a latest Supreme Court decision, difficulty in writing and difficulty in writing the examination have been considered as 2 different concepts. When we say difficulty in writing the examination, that means even processing in your brain the information given in the question paper will be included there. But when we talk just difficulty in writing, then only the anatomical deficiency we are talking about. So यहाँ पे ये difference है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन में ये कहा कि आप उनको भी include करें who have difficulty in writing the examination, not per se difficulty in writing. So the new guidelines have taken care of that. एंड आपको पता ही है कि इससे पहले एक डिसीजन और आया था 2021 में, जब उन्होंने कहा 40% का लिमिट जो है 40% की सीलिंग जो है फॉर द पर्पस ऑफ स्क्राइब एंड ऑल इज नॉट रेलेवेंट, यू शुड गिव इट बिलो 40% ऑल्सो, राइट. इसके अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं इसके मेरिट्स और उसमें जाऊं कि हाउ दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू और प्रोपेंसिटी ऑफ बीइंग मिसयूज. आई एम नॉट गोइंग इनटू दोज डिटेल्स. But if we become independent in true sense, like our secretary was telling you, that try and use the digital media, try and use computers, you become independent. Why you should depend on a scribe? Ideally, if you can do that, then your performance is going to be very higher, than what it is today. Sir spoke about Pallavi Adhikari, and let me tell you one very small thing about Pallavi Adhikari. This is one thing, she scored 94% marks in her CBSE examination. But this girl is now, a co-traveler with you in Delhi University. She has just joined Lady Shri Ram College this year. And when she appeared in the CUET examination, something happened. On 16th of May, when she appeared in the examination, she was not provided with the scribe. She was given a scribe who was 8th class Hindi medium student. The examination was of English paper. There was, of course, if it is a language paper, you will not have a bilingual paper. The scribe could not read the paper, could not pronounce those words, and therefore the examination got totally affected, and she couldn't, obviously perform properly. And on 17th, she came to CCPD office just through telephone calls. But anyway, 18th we got the complaint filed, 21st we got the matter heard, and 22nd, her next examination was there. She got a scribe of her choice, which was earlier not allowed. And the paper, 2 papers she appeared on 16, English and political science. Those papers for one girl, CCPD was able to persuade. In fact, I must say that NTA itself offered
that they will conduct a re-examination for one blind student. Fresh CUET paper was conducted for Pallavi Adhikari, and she scored good enough marks. She wanted to come to Hindu College, but LSR is also a dream for thousands, if not millions of people. So that is how Pallavi has come here. How you file complaint? There is a portal, CCPD code, ccpdcode.gov.in. उस पर आप जाएं. You need 4 things to register your complaint. One is your mobile number, second your email ID, third is your UDID card, and fourth is your Aadhaar card. With these 4 documents on your mobile phone, you can register yourself in 5 minutes, and in the next 5 minutes you can file a complaint. We are trying to get audio filing or visual filing or sign language complaint filing facilities also in that portal, but right now we do not have these features. I think I will stop here. I have spoken for a very long time. Thank you. It is a fashion and it's a style that a conference or a function is not going well if it doesn't keep time, if it keeps time. So we are on the fashion trail. Now let me ask Dr. Pankaj, sir, the audience would very much like to know what are the various provisions and resources available for students in from the government. Number 1, number 2, how can they apply for them? So if we can just get on to the listing style rather than describing style. Will that be possible? Yes. Yeah, thank you. Thank you so much, sir. First of all, I want to just appreciate the effort of Professor Sathi sir. The inspiring initiatives have been taken by him and George Ram sir in the form of CDRT and Eyeway. और सबसे पहले सभी जितने यहाँ लोग बैठे हैं जो काफी विजनरी हैं, मगर there is loss of sight but they are vision, full of vision, उन सबको भी प्रणाम. और सबसे पहले अगर एजुकेशन पर मैं हिस्ट्री पे ही बात करूंगा, 2 छोटी सी बात है कि अगर आप एनईपी को देखते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है जो एजुकेशन को राइट करती है. जैसे साहब ने कहा कि सेक्रेटरी साहब ने कहा कि व्हाट इज रिक्वायर्ड एजुकेशन 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 एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन दिस इज डिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन 16 and 17 of or 18 also of the RPWD Act as chapter 3 of that particular act. अगर आप उसके प्रोविजंस को देखते हैं, हमें पाना कैसे है उस चीज को, तो शिक्षा के लिए 2 चीज महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनईपी के पहले है कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए, एजुकेशन के लिए क्या चाहिए. तो डिसेबिलिटी के लिए जो सबसे पंच लाइन है दैट इज सेफ एंड स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट. कैसा हमें चाहिए? हमें एजुकेशन ऐसा चाहिए जहां पर सेफ एंड स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट. और जो किसी पहले बच्चे का सवाल था ब्रेन इसीलिए फैसिनेटिंग है और इसलिए अच्छा है, इसलिए सब लोग बोलते हैं बिकॉज इट्स सो स्टिमुलेटिंग. अब मैं बहुत लंबा खींचूंगा तो होगा नहीं, शायद समय की बाध्यता है. मैं आपको 1-2 इंफॉर्मेशन ब्रेन पर देना चाहता हूं, ब्रेन और जो रिसोर्सेज है उस पर. सबसे पहला कि आप सब लोग का स्वागत है. ब्रेन पर ही NIPVD एक कॉन्फ्रेंस कर रही है. जो आप लोग ब्रेन पे डिस्कशन चाहते हैं, कुछ फोरम चाहते हैं, कुछ पॉलिसी के रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं, प्लीज कम टू NIPVD ऑन 1st and 2nd of November. एंड इंफॉर्मेशन आप सिर्फ अपने गूगल पे भी सर्च करेंगे NIPVD ब्रेन कॉन्फ्रेंस तो एक बार में आएगा आपके पास. मैं सती सर से और जॉर्ज अब्राहम सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि how we can support to collaborate this event to make it more successful because you can raise your voice in the form of requirement of brain. इसका टाइटल है empowering through touch and technology. Touch representing the manual brain and technology representing the new kind of brain. ब्रेन तो वही है मगर ब्रेन का एक्सेस करने का तरीका बदल रहा है. मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट. भारत सरकार की एक योजना है जिसका एक परियोजना के रूप में इसका नाम है DALM प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल प्रोजेक्ट. और इस प्रोजेक्ट के तहत इसका पहले नाम क्या था, आपको तब ज्यादा अच्छा लगेगा. उसका नाम था पहले ब्रेन प्रेस स्कीम. 2014-15 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय ही ब्रेन प्रेस परियोजना योजना चलाई गई. आज उसका नाम थोड़ा बदल के क्योंकि उसको और व्यापकता दी गई. सिर्फ ब्रेन ही नहीं आवश्यक है, इसके अतिरिक्त जो भी फॉर्मेट्स लाइक EPUB, लार्ज प्रिंट,
टॉकिंग बुक, ये जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ में इंक्लूड किया गया। तो नाउ इट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड नेम इज डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल। अभी इसके तहत करीब 25 ब्रेल प्रेस पूरे इंडिया में उस एफर्ट्स के साथ या तो स्ट्रेंथन किए गए या एस्टैब्लिश किए गए। दूसरा, ईपब के भी 6 सेंटर्स हैं और लार्ज प्रिंट के भी 2 सेंटर्स हैं और इस तरह से पूरी कंट्री में सेंटर है। अब मैं आपको अपनी इंटाइटलमेंट बताता हूं। आप उस परियोजना के तहत किसी भी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी से आप रिक्वायरमेंट मांग सकते हैं कि आपको चीजें चाहिए, और उसकी जो रिम्बर्समेंट है, मतलब उसके लिए एनआईपीवीडी नोडल एजेंसी है, जो देहरादून की एनआईपीवीडी है, एक नोडल एजेंसी है, और उसको उसके अगेंस्ट रिम्बर्समेंट दे दिया था कि आपने उस बच्चे को मुहैया कराई है, किताब उपलब्ध कराई है, प्रोवाइडेड एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल, तो उसको रिम्बर्स किया था। तो आप कैसे कर सकते हैं? आप इसके लिए हमारे एनआईपीवीडी के वेबसाइट पे जाइए, वहां पर एक स्कीम टैब है। अगर आप किसी भी समय टाइप भी करेंगे DLM NIPVD, प्लीज नोट करके रखें। मैंने स्लाइड बहुत सारे बनाए लेकिन मैं मूव करने के बहुत उसमें नहीं NIPVD को, मैं सिर्फ आपको थोड़ा खड़ा हो गया ताकि मैं ज्यादा मूवमेंट करूं तो एनर्जेटिक फील करूं अपने आप को। तो आप प्लीज कैसे ले सकते हैं? आप DLM योजना के तहत आप जाइए, वहां पर इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज के लिस्ट बने, आप अपने पसंद के इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को चुन सकते हैं। इन दिल्ली ब्रेल प्रेस AICB में है और एक ब्रेल प्रेस बहादुरगढ़ में भी हरियाणा के पास है। आप उनसे किताबें DLM परियोजना के तहत मांग सकते हैं और वो आपको निःशुल्क मिलेगा पूरी तरह से, और उसकी परिपूर्ति जो है NIPVD DPWD NIPVD के थ्रू करती है। एक योजना को जाने। ईपब के लिए सक्षम, जानते हैं आप सक्षम को? अब सक्षम पिछले साल से, इसी बार से अब वो इम्पैनल्ड है आपके लिए। आप जो किताब डिमांड करेंगे, जो आपके एकेडमिक बुक होने चाहिए, ध्यान रखिए आपके सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए, जब आप डिमांड करते हैं वो ईपब में उपलब्ध कराएंगे, आपको ये उपलब्ध कराएंगे, और बाद में हम लोग NIPVD DPWD के थ्रू, मतलब DPD NIPVD के थ्रू इसकी परिपूर्ति करती है, उनके तरफ उनको फंडिंग भी करते हैं ताकि वो आपको फ्री में उपलब्ध कर पाए। और इसके लिए जरिया क्या बनेगा? बहुत बार अब बात आती है कि हम एक्सेस कैसे करें। एक्सेस करने के लिए अभी मान लीजिए कि हो सकता है कि किसी ने पहले ही वो किताब कन्वर्ट करा ली, तो आपको दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। तो सुगम्य पुस्तकालय पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आप लोग कितने लोग हैं सुगम्य पुस्तकालय पे? सब लोग हैं? अगर आप में से जो लोग भी नहीं हैं, प्लीज अपने आप को सुगम्य पुस्तकालय पे रजिस्टर करें। मैं नंबर आपको यहां शेयर करना चाहता हूं, प्लीज नोट कर लेंगे सब लोग। अगर किसी को भी सुगम्य पुस्तकालय पे रजिस्टर करने में असुविधा होती है, आपका कोई साथी है, उसको ये नंबर दीजिए, इससे व्हाट्सएप से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये NIPVD के नेशनल एक्सेसिबल लाइब्रेरी जो है यूनिट, उसका नंबर है। वो आपको सुगम्य पुस्तकालय पे भी रजिस्टर करने में पूरी तरह से हेल्प करेंगे। यहाँ पर NIPVD में बुक्स अवेलेबल है, वो आपको अवेलेबल कराएंगे। अभी तक जो भी मैं बोल रहा हूँ, किसी के लिए भी कहीं पर कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको UDID हर चीज में लगेगा। अगर आपके पास वैलिड UDID नहीं है तो पूरा आप DLM के परियोजना के तहत डिमांड नहीं कर सकते। तो यू मस्ट हैव UDID नंबर। तो एक नंबर है, नोट कर ले, 90274 29610 90274 29610। आप इस नंबर पर अगर आपको कोई असुविधा हो कि यू वांट टू एक्सेस सुगम्य पुस्तकालय आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उसको फोन कर सकते हैं। और दूसरा, किताबें कहां से मांग सकते हैं? भारत सरकार की योजना के तहत ही आप सक्षम जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है हमारे इस परियोजना में, या फिर NIPVD को देहरादून को आप सीधे लिखें, जिस माध्यम से भी लिख सकते हैं, लिखें, ईमेल करें, आप अपनी किताब डिमांड कर सकते हैं। या नियरेस्ट सबसे अच्छा, अगर आप दिल्ली में है तो मैं तो आपको कहूंगा कि सक्षम, अगर आपके कांटेक्ट में अभी वो मैडम कुछ अपनी बताएंगी भी तो कांटेक्ट नंबर भी देंगी, आप उनको संपर्क कर सकते हैं। इवन आपका अगर ये जो ईपब सेंटर अगर है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है, वो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बनना चाहती है हमारे अंदर, यहाँ पर DPWD के अंदर, तो आप उसके लिए भी अपने कोशिश, मैं सबके लिए रख रहा हूं कि CDRT इफ यू वांट टू बिकम एन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कैन ऑल्सो अप्लाई, वो कर सकते हैं। ताकि बच्चों की जरूरत बहुत है, इतनी किताबें चाहिए,
दूसरे लोगों के लिए भी, मैं देखा सुपर पुस्तकालय का अभी तक सिर्फ 6 लाख किताबें, क्या और दूसरे लोगों के लिए सिर्फ 6 लाख किताबें हैं? अगर उसमें भी इंडियन किताब देखें तो 6,000 रुपये चली आती है, मतलब जो यहाँ डेवलप हुई। किताबें बहुत रिक्वायर्ड है, हमें बहुत सारी एजेंसीज को और इवॉल्व होना पड़ेगा। हमने से कोई जो पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं वो हमें आकर के सशक्त करना होगा, सिस्टम को और इंप्रूव करना होगा। हम दूसरे के भरोसे क्यों रहें, हम भी खुद आप इनिशिएटिव करें कि हाउ वी कैन सपोर्ट, दूसरे बच्चों को हम कैसे सपोर्ट कर सकते। क्या आप जब यहां पहुंचे हैं, इस कमरे में जो बैठा है अपने आप में कम गुणवान नहीं है, आप सब लोग बहुत पोटेंशियल भरे हुए, प्रतिभा से भरे हुए लोग हैं, तभी आप यहाँ पहुंचे। यहाँ तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात, ये जर्नी का हिस्सा है। आप लोग सब लोग जानते हैं इसको, जैसे सर प्राउडली कह रहे हैं कि आई एम पार्ट ऑफ डीयू, और सब लोग बता रहे हैं। मैं तो डीयू में नहीं पढ़ा, तो इतना सौभाग्यशाली नहीं, लेकिन वहां मैंने बीएचयू में पढ़ाई थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट रहा हूं। और आप सब लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, फील ऐसा करें। मैं ब्रीफ छोटा सा एनआईपीवीडी के बारे में बताना चाहता हूं। बस 3-4 मिनट लूंगा सर, ज्यादा नहीं। एनआईपीवीडी 1943 से काम कर रहा है। आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे एनआईपीवीडी को, जो पहले सेंट डेंसर्स हॉस्टल के नाम से स्टार्ट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। बाद में इसका नाम एनआईवीएच हुआ 1979 में, एनआईवीएच, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप। हैंडीकैप एक वर्ड ऑफेंसिव वर्ड बना। 2016 में प्रधानमंत्री के निर्देश पे उनके द्वारा नाम सब चेंज किए गए। उसमें अब हमारा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, और हिंदी में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान है। अब नेक्स्ट करेंगे, तो अगर आप आगे देखें तो हमारे कई सारे सर्विसेज हैं। तो उसमें से सबसे पहले कि हम बहुत सारे लॉन्ग टर्म कोर्सेज ऑफर करते हैं। मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर आप में से कोई ग्रेजुएट होते हैं, अगर हमारे यहाँ बीएड, एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी, अभी विजुअली इंपेयर्ड बच्चे ने एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी किया कुछ दिन पहले। अब वो एमफिल का कोर्स नॉमेनक्लेचर चेंज हो रहा है एज पर एनईपी, मगर हमारे पास कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनली साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं, विजुअली इंपेयर्ड बच्चा। तो आप भी उनमें से कोई हो सकते हैं। यू प्लीज ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूट। कोई अगर कैरियर कोर्सेज को करना चाहते हैं, बीएड, एमएड, कई सारे कोर्सेज हमारे पास हैं, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। नेक्स्ट हमारे पास कई सारे ऐसे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होते हैं। प्लीज आइए, विजिट कीजिए इंस्टीट्यूट को। आप इंस्टीट्यूट, एक बच्चे के जब मैं पढ़ता था तो कम से कम लगता है 40-50 शहर से ज्यादा घूम लिया था स्टूडेंट के लाइफ में। आप लोग भी घूमिए फिरिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज चलते हैं जिसको आप कर सकते हैं, या सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्लीज कम टू एनआईपीवीडी। नेक्स्ट जो हमारा कुछ स्किल के कोर्सेज हैं जो आप दूसरे को सजेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास कई ऐसे स्किल के कोर्सेज हैं जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, उनको हम लोग अपने यहाँ लागू कर रहे हैं। कई और भी इंडस्ट्री से हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं, डायरेक्टली वो कोर्स चलाएं और उन बच्चों का जॉब भी सेक्टर करें अपने यहाँ। तो हमारे पास कई सारे कोर्सेज हैं। कोचिंग के लिए भी, जैसे अब डीयू में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, या डीयू से कोई बच्चा या फिर हमारे यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ा है वो कोचिंग करना चाहता है, हमारे पास फ्री कोचिंग स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो लागू है। आप वहां पर आकर के, हम लोग स्टे भी देते हैं कोचिंग पीरियड का, और वहां आकर के कोचिंग क्लासेस कर सकते हैं। 3 महीने के आसपास का कोचिंग का क्लासेस होती है। नेक्स्ट, अगर आप में से कोई, बहुत सारे लोग हैं कि जो बाद में अपने लाइफ के बाद में स्पेंड में ब्लाइंड पर्सन, ब्लाइंडनेस आती है उनमें, या लो विजन आता है, ऐसा कोई भी होता है कंडीशन, हमारे पास एक बहुत स्पेशलाइज्ड कोर्स है। आप उसके कभी जब जो लोग ने कोर्स किया है बहुत अच्छा फील करते हैं। हमारे पास जो कोर्स है वो हम लोग उसे एडजस्टमेंट कोर्स कहते हैं। कोर्स का बहुत पॉपुलर है। आप वहां प्लीज किसी को भी जहां भी लगे कि कोई नया बाद में ब्लाइंडनेस आया है तो वो उस कोर्स को करे। इसके अलावा हमारे पास कई क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर हैं जहां पर अभी क्या हो गया कि एक नाम आपने सुना है, आप में से कोई जानते होंगे, सीबीआई, सेरेब्रल विजुअल इंपेयरमेंट, है ना? आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो जाने। आप हमें से कई लोग मानते हैं कि हम आंखों से देखते हैं, ये भ्रम है। हम आंख से तो देखते ही नहीं। आंखों कोई अगर आंख से देखते तो हम हर चीज 2 देखते हैं। क्या हम 2 चीज देखते हैं? नहीं ना, हम एक ही चीज तो देखते हैं। यानी कि हम आंखों से देखते नहीं। आंख में इमेज कैसा बनता है? उल्टा। और हम देख कैसा है? सीधा, जैसा हमें दिख रहा है, और इमेज बना उल्टा। यानी ब्रेन मेन ऑर्गन जो हमें देखने की वजह करता है। तो एक विजुअली इंपेयर्ड बच्चे के पास भी ब्रेन तो पूरा का पूरा है, लेकिन आजकल एक सेरेब्रल विजुअल इंपेयरमेंट क्या होता है कि आंखें बिल्कुल ठीक है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है।
तो दूसरे डिस्फंक्शन भी आते हैं। तो अब ऐसा फील्ड भी आ रहा है जहां मल्टीपल डिसेबिलिटी की पोर्शन बने, तो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर वो प्रोवाइड कर रही है। एक हमारे पास एक कोर्स भी है, रेडियो जॉकी का चलता है, हमारे पास एक रेडियो है NITVD में। आप कभी भी कोई आइए, छोटा मोटा कोई रिकॉर्ड करना चाहते हैं, प्लीज वेलकम, आपको सभी लोग आ सकते हैं। NITVD में रेडियो है, 91.2 FM रेडियो स्टेशन है। नेक्स्ट हमारे पास कई सारे ऐसे जो असिस्टिव डिवाइसेस हैं वहां डिस्ट्रीब्यूट है, आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे जो लोग हैं। इसके अलावा नेक्स्ट की हमारे पास एक CBSE का स्कूल है जो सेक्रेटरी सर भी तारीफ कर रहे थे। वहां पे बच्चे क्लास 2 से अब कंप्यूटर वगैरह सीख रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं खुद से, और वहां कई सारे CBSE ने उसे बेस्ट स्कूल का अवार्ड भी दिया, और कई सारे वहां बच्चे करके बहुत अच्छा अपने लाइफ को कर रहे हैं। तो आप में से कोई कौन है मॉडल स्कूल से, कोई कौन पढ़ा हुआ है यहाँ है कोई स्टूडेंट? हाँ, वेरी गुड। तो हमारे पास यहाँ पर भी बच्चे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और आगे भी जॉब, बहुत बढ़िया, तो उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस तरह से कई सारे हैं। नेशनल एक्सेसिबल आईडी के बारे में मैंने बताया आपको, नेक्स्ट कर दीजिए। तो अब कुछ हमारे पास M3 जो मैंने बोला क्लिनिकल साइकोलॉजी है, PGDRT है, MSc साइकोलॉजी, कई सारे प्रोग्राम है जो दूसरे लोग के लिए भी है, साथ में विजुअली इंपेयर्ड बच्चे भी वहां पढ़ सकते हैं। और आगे जो देखिएगा तो हमारा ब्रेन प्रेस है हमारा एक, जहां से आप ब्रेन की किताबें ले सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हमारा प्रेस भी वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, आपको जो किताबें चाहिए आप वहां अपनी डिमांड रखिए। अगर उसकी सॉफ्ट कॉपी होगी तो तुरंत अवेलेबल कराएंगे, वरना डेवलप करेंगे। लेकिन मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्रोसीड फॉर EPUB। EPUB से फायदा ये है कि अगर आपके पास RBD है तो आप ब्रेल में भी पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं उसी डॉक्यूमेंट को, उसी फाइल से। आपके पास RBD है, अब हर जगह RBD रिसोर्स सेंटर में लग रहे हैं, आप उस EPUB को, उस फाइल को लेकर के अपने डिवाइस में डालेंगे और वो RBD से आप ब्रेल में पढ़ सकेंगे। एक साथ हजारों किताब रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो प्लीज, ब्रेल ही है वो, लेकिन ब्रेल का प्रारूप बदला। आप ब्रेल की किताबों को कितना उठा के घूम सकेंगे, और उसको अगर RBD एक अपने पास रखते हैं तो आप एक साथ 10,000 लाखों बुक एक साथ कैरी कर सकते हैं। तो जो सेक्रेटरी सर कहना नहीं चाहते वही कहना चाहते हैं। और टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बस इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप DLM परियोजना के तहत जरूर लाभ लें। DLM को सिर्फ सर्च करें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अगर फिर भी लगता है कि कोई चीजों को आप जानना चाहते हैं तो हमसे तुरंत संपर्क कर सकते हैं NITVD पे। और मेरा नंबर तो सर ने बहुत पहले से Eyeway पे डाला हुआ है, तो मुझे दिन भर परेशान सर करते रहते हैं। Eyeway से के थ्रू मुझे फोन आता है, सर कहाँ से नंबर मिला, तो बोलते हैं Eyeway से मिला है, और अक्सर ना घंटी मेरी बजती रहती है। तो कभी भी आप प्लीज, आपका स्वागत है हमारे संस्थान में, या हमसे किसी प्रकार का सहयोग लेने में या किसी प्रकार की जानकारी लेने में बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद डॉक्टर पंकज कुमार। आज का अगला स्पीकर जो लगभग लास्ट स्पीकर है, ये हमारे, हम लोग सक्षम का नाम बार बार सुना। सक्षम भी CDRT के साथ पार्टनरशिप में दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आरती चनाना अभी अपना PPT प्रेजेंटेशन करेंगे। हमारा रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी संक्षेप में करें, ताकि वी कैन ऑल्सो फिट इन द अदर थिंग्स वी हैव प्लान्ड। सो Thank you, sir. So, good evening, everyone. Finally, the last talk of the day, and I'll try to make it interesting for you. सक्षम को तो आप सब लोग जानते हैं। कौन यहाँ पे ऐसा है जो सक्षम को नहीं जानता? कोई है ऐसा? Anyone raising hand, which I cannot see? So, मेरी आज की प्रेजेंटेशन मुझे कहा गया था कि मैं इस चीज पे दूं कि सक्षम KMC के साथ मिलके आरोहण प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या क्या किया वो मैं सबको बताऊं। तो वहां तक आने से पहले आई वुड वांट दैट, बिकॉज यू ऑल हैव बीन हियर, सक्षम इज working with CMC since 2021 जुलाई ऑनवर्ड्स। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो सब लोग शुरू से ही सक्षम के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप में से कौन कौन बताएगा कि अब तक सक्षम ने आपके साथ
क्या क्या एक्टिविटीज करी, किस तरह की सपोर्ट एंड सर्विसेज आप लोगों को ऑलरेडी मिल रही हैं, और उसमें अगर कुछ मिस करोगे तो मैं आई एड ऑन टू इट, एंड देन व्हाट एल्स वुड यू वांट अस टू डू फॉर यू। सो एक एक करके पहले एक्टिविटीज पे नजर डालते हैं कि सक्षम के साथ आपने कहाँ पर सक्षम को देखा। आपने CDRT में सेंटर, आई एम वेरी थैंकफुल टू सोमेश्वर सतीश जी who facilitated this center at Kirori Mal College, where Saksham has this resource center, and we are present here all through the day, and it is manned by majorly Vijay को तो सब जानते ही होंगे यहाँ पर। विजय सबसे ज्यादा घूमता फिरता कूदता फांता इंसान यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो विजय इज मैनिंग दैट सेंटर राइट नाउ, और कभी कभी शिफ्ट चेंज होती रहती है, तो हम ऑलवेज आपकी सेवा के लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो बुक्स तो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आपकी आती ही रहती हैं, ठीक है। कुछ अराउंड 150 प्लस बुक्स हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं, जो कि अभी तक हमारे को फंड सपोर्टेड नहीं था, हम आपके लिए एक्सेसिबल मीडियम में कन्वर्ट कर चुके हैं। बट अभी जैसे आपको पंकज सर ने बताया कि नाउ अंडर DALM स्कीम वो सारी बुक्स अब जितनी भी आपके लिए हम कन्वर्ट करेंगे, उसको फंडिंग, उसका सपोर्ट हमारे को NIPVT से मिलेगा। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम फॉर दिस। आप लोगों को आपकी एजुकेशन में आपको अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स में इस चीज से बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसके साथ साथ मैं ये जो जॉर्ज सर है, जॉर्ज सर को मैं बोलना चाहूंगी, वेलकम टू द फैमिली सर। वी आर ऑलरेडी वर्किंग विद KMC, तो आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करके इको सिस्टम को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इसको और फर्म कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए डेफिनेटली बहुत हेल्प होने वाली है, नॉट जस्ट फॉर KMC स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो इससे पहले मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं, कोई क्या इसमें बताना चाहेगा सक्षम ने क्या क्या किया, आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, कौन बताना चाहेगा? बुक स्कैनिंग, वेरी गुड। ट्रेनिंग्स और कंप्यूटर ट्रेनिंग, वेरी गुड। सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप अभी तो हुई कुछ दिन पहले, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे आप लोग? साइटेड बच्चे ज्यादा थे उसमें, बट आप लोगों की भी कुछ पार्टिसिपेशन थी। तो मैं जल्दी से आपको बताना चाहूंगी कि हमने क्या क्या किया अभी तक, एक्टिविटीज जो हमने KMC के साथ मिलकर आप लोगों के लिए अरेंज करी है। इधर आप जल्दी से ओके, सक्षम के बारे में तो आप सब लोग जानते थे, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। हम टेक्नोलॉजी के थ्रू एजुकेशन एंड इंडिपेंडेंट लिविंग को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे कुछ वर्टिकल्स हैं, जो कि है एक्सेसिबल बुक्स, प्रोडक्शन, ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज का भी तो हमने स्क्रीनिंग करी थी, अगर आप भूल रहे हो। ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज देखी है, जब फिल्म फेस्टिवल चल रहा था हमने यूनिवर्सिटी में कुछ टाइम पहले। उसके अलावा हमारे असिस्टेंट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग है, और हमारा एक स्कूल है फॉर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज इन नोएडा। तो हमने बेसिकली आरोहण प्रोग्राम स्टार्ट इसलिए करा था बिकॉज वी सॉ देयर आर सम गैप्स इन द हायर एजुकेशन सिस्टम, and that like there is lack of sensitization about the accommodations required by students with visual impairment, inadequate participation and involvement of these students in various activities of the college, lack of access to essential assistive solutions for reading and writing, unavailability of books and course materials, inability of students to study STEM subjects, and lack of awareness and appropriate skills for employability in current job requirements. तो ये कुछ गैप्स थे जो हमने देखे, हमने आइडेंटिफाई करे, क्योंकि हायर एजुकेशन सिस्टम में इसी रैशनल से हमने प्रोजेक्ट आरोहण स्टार्ट करा। आरोहण का बेसिकली मतलब है सब मिलके साथ चले, आगे बढ़े। तो ये प्रोजेक्ट हमने, आप जैसे पिक्चर्स में कुछ लोग देख पा रहे हैं, नेक्स्ट आगे चलिए। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू एंश्योर इंक्लूजन एंड रीजनेबल अकोमोडेशन, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, by identifying the existing gaps and designing and undertaking the suitable activities to address these gaps, to enable the students with blindness to carry out their education and other related activities independently, and to promote greater learning. Basically जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती है अपनी एजुकेशन में, जैसे आप
आपके पीयर ग्रुप हैं वो सेंसिटाइज नहीं है, आपके पास असिस्टिव टेक्नोलॉजी सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, उसको यूज करने की कैपेसिटी या स्किल्स नहीं है, आपके पास बुक्स नहीं है, ठीक है, जिस तरह के भी चैलेंजेस आप लोग सब, आपको करियर चॉइसेस नहीं पता, करियर के बारे में नहीं पता, इसके बाद क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को हमने रिकॉग्नाइज करके उनको स्टेप बाय स्टेप एड्रेस करके आप लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए हमने ये एक्सेसिबल ये जो मूवीज का फेस्ट लगाया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक्चुअली इन्हीं प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए प्लान की गई, एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया। नॉट जस्ट केएमसी, हमने एक्चुअली इस प्रोजेक्ट आरोहण के अंदर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट किया। केएमसी इज वन ऑफ देम, जेडीएमसी, देन हिंदू कॉलेज, फिर हमने भारती कॉलेज और गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, और अभी रिसेंटली शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ, ये यूनिवर्सिटी भी हमारी लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस में ऐड हुई है। सो या नेक्स्ट प्लीज। तो हमने एक्चुअली जुलाई 2021 में स्टार्टेड दिस, और 30 सितंबर 2021 को ऑफिशियली आरोहण जो है लॉन्च हुआ था प्रोग्राम केएमसी में, एंड इन 2023 फाइनली वी गॉट अ स्पेस इन द कॉलेज इटसेल्फ to support you 24/7. ठीक है, next. You can see some pictures of the inauguration. Yes, next. हाँ, अब मैं आपको बताने वाली हूँ हम एक एक करके हमने क्या क्या चीजें करी। ऑर्गेनाइज लेक्चर्स ऑन डिसेबिलिटी, हमने डिसेबिलिटी के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करे फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, एंड मिस्टर दीपेंद्र मल्होत्रा ने माराकेश ट्रीटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया के ऊपर एक सेशन पूरा कंडक्ट किया। देन हमने बच्चों के साथ 1-to-1 सेशंस करें, बच्चों के साथ 1-to-1 सेशंस करें ताकि हम समझ सकें कि किस बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, क्या उसकी एस्पिरेशंस है, और उसको पर्सनली क्या गाइडेंस चाहिए, क्या हेल्प चाहिए सेक्शन से, और उस हिसाब से हमने उनके लिए पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया कि इस बच्चे के पास लैपटॉप है और इसके पास नहीं है, इसके पास डिज्नी प्लेयर है, तो इसको क्या देना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग किस चीज के लिए होनी चाहिए, ठीक है। ये अगर स्टेम सब्जेक्ट में कुछ करना चाहते हैं तो इसको हम आपको स्टेम की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से 1-to-1 सेशन क्रिएट करके हमने उनके लिए कस्टमाइज प्लान्स बनाए हुए। नेक्स्ट, अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप, तो आपने भी जस्ट मैंने बताया, जिसमें हम ब्लाइंड फोल्ड करके साइटेड बच्चों को ये एक्सपीरियंस करवाते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस विच अ ब्लाइंड पर्सन फेसेस, और उसको ओवरकम करने के लिए टेक्नोलॉजी हाउ इट हैज बीन हेल्पफुल। सो उनको पता चले कि अगर मेरी क्लास में मेरे साथ एक ब्लाइंड बच्चा बैठा है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, और उसके प्रति एक एम्पैथी का एटीट्यूड रखते हुए वो उसकी हेल्प करे, उसको सपोर्ट करे। नेक्स्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं, वी ऑल्सो प्रोवाइडेड लॉट ऑफ लैपटॉप्स, आरबीडीज, डेजी प्लेयर्स, एंड्रॉइड टैबलेट्स विद ब्लूटूथ कीबोर्ड्स बच्चों को हमने प्रोवाइड करे। आपके लिए फंड रेज करा हमने और ये डिवाइसेस अवेलेबल करवाए। नेक्स्ट प्लीज। एक्सेसिबल फिल्म फिएस्टा आप देख रहे हैं, इसमें हमने हिचकी, ब्लैक, दृश्यम और इस तरह की मूवीज 83, ठीक है, ये सारी बर्फी, ये सारी मूवीज हमने आपके लिए शो करी। या नेक्स्ट, प्रशिक्षण करके हमने एक प्रोग्राम डायरेक्टेड टू प्रोमोटिंग इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन हमने किया, जिसके अंदर हमने स्किल ट्रेनिंग करी, एंड दिस वाज अ सर्टिफाइड कोर्स ऑन मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल। अब ये वाला जो ट्रेनिंग कोर्स है दैट वाज फॉर साइटेड स्टूडेंट्स, कि वो बच्चे कैसे इस कोर्स को करके आपके लिए, साइटेड बच्चे कैसे आपके लिए बुक कन्वर्जन करके आपको सपोर्ट कर सकते हैं। So that was a certified course, very successful. It went, yes. Then we also organized, capacity building session for teachers. जो कि हमने IIT दिल्ली के साथ मिलके वर्कशॉप was held for students and faculty members of KMC in collaboration with NCHAHT IIT Delhi, and the topic of the workshop was accessible content and use of assistive technology in higher education. तो ये बेसिकली स्टेम लर्निंग को फॉस्टर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, टीचर्स और स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए 2 दिन की वर्कशॉप थी। थैंक यू। आगे उसके बाद हमने बच्चों के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करी, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, जिसमें फंडामेंटल कंप्यूटर एप्लीकेशंस, क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग डॉक्यूमेंट्स यूजिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी, MS Excel, सॉल्यूशंस एंड एप्लीकेशंस फॉर रीडिंग एंड राइटिंग मैथमेटिक्स। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होगा और नहीं होगा, तो एटलीस्ट आप चाह रहे होंगे कि कहीं से हम मैथ्स भी कर सके, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, तो उनके लिए हमने इस तरह का कोर्स एक डिवाइस करा। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग लाइक ट्रेनिंग इन इंग्लिश
लैंग्वेज करवाई हमने एंड क्रिएशन ऑफ एक्सेसिबल कंटेंट। ये हमने एक्चुअली बच्चों की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए उनके लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्लान करके उनकी ट्रेनिंग करें। नेक्स्ट देन हमने KMC के साथ मिलके CDRT के साथ मिलके एक फेस्ट एक एक्सपो ऑर्गेनाइज कराया विच इज एक्सेसिबल हॉराइजन्स। दिस वाज टू प्रमोट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। आप सबने पार्टिसिपेट किया होगा उसमें। लास्ट ईयर था लास्ट ईयर था कब था सेमेस्टर था लास्ट ईयर पर्पल फेस्ट भी हमने उसको बोला था, तो दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। नेक्स्ट प्लीज। मोर देन 20 NGOs participated in that fest and yeah. So we organize digithons to promote production of accessible books. Digithons basically जैसे मैराथॉन्स होते हैं, हमने इवेंट्स का नाम रखा digithons कि देखते कि एक कंपटीशन जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे एक्सेसिबल प्रोडक्ट बुक का कन्वर्जन कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं कि कौन ज्यादा कर सकता है, परफेक्शन से कर सकता है। तो इस तरह से हमने इवेंट्स रखे बच्चों को सेंसिटाइज करने के लिए और इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस सेशन फॉर करियर डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि करियर ऑप्शन बहुत बच्चों को नहीं पता होता। हम अलग अलग फील्ड से करियर के जो इस तरह के जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैं, जो अच्छी पोजीशंस पे हैं इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक लॉ, टीचिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, सबको हम एक एक करके लेकर आए। हमने एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स चलाया विच वाज थ्रू वेबिनार्स के थ्रू हमने करियर काउंसलिंग करी, बच्चों के क्वेश्चंस लिए और उनको एड्रेस किया कि आगे कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुंचने के लिए किस रास्ते को आपको अपनाना होगा, क्या क्या उसके अंदर बाधाएं होंगी और किस तरह से आप उसको वहां तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट तो हमारी कुछ यूजर स्टोरीज आई थिंक आई शुड नॉट टेक मच टाइम, तो कुछ बच्चों के हमारे कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं जो मैं अभी स्किप करूंगी। अगर आप प्ले हो रहे हैं तो प्ले कर दीजिए। केशव इज परस्यूइंग फर्स्ट ग्रेजुएशन। केशव है यहाँ पे? इस केशव क्या? ओके ओके नेक्स्ट। शर्फुद्दीन अंसारी है यहाँ पर? मेरे पास ये टेस्टिमोनियल्स आए थे सबके। चलिए कोई। और हम लास्ट में एक्सेसिबल बुक कन्वर्जन में मैं बताना चाहूंगी कि हमने ऑलरेडी हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल, संस्कृत, इन सारी बुक्स की कन्वर्जन कर चुके हैं। मोर देन 150 बुक्स हम अब तक डिलीवर कर चुके हैं और DLM की स्कीम में हम बहुत सारी बुक्स करने वाले हैं। विद दैट नोट, माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप, देयर इज टू मच टू बी डन, अभी इट इज जस्ट अ मिनिस्क्यूल। सो थैंक यू सो मच एंड टुगेदर वी आर गोइंग टू Thank you. Dhanyawad Aarti. I'd just like to quickly thank all the panelists, Dr. Pankaj Kumar, Mr. Praveen Prakash Ambasta, and Aarti Chanana, and Sarita Chand ji, जो पहले यहाँ से निकल चुके हैं। So एक बार मैं चल रहा था तो किसी ने पूछा आप कौन, तो मैंने कहा विजय दीनानाथ चौहान। बाप का नाम मेरे बाप तक नहीं जाएगा, आप तक सीमित रखिएगा। ओके, तो हम कहाँ से हैं? स्कोर फाउंडेशन। तो आप सोचते हो कि ये स्कोर फाउंडेशन है क्या? तो अगर आप लोग अलाउ करते हैं तो हम एक 5 मिनट का छोटा फिल्म दिखाएंगे आपको, राइट? या तो एक तालियां मारिए ताकि हम हमारे की right, and thank you very much, and I'm handing over the mic to Shweta. So Score Foundation is not just an organization, but it's an idea that was born out of deep compassion and an unshakable faith in equality and inclusivity. So to see that inspiring journey, right now we would be looking at a very short film of 6 minutes. So yeah, here we go. Hello, this is Score Foundation. How may I help you? Every journey begins with a question. At Score Foundation, we listen and we act. In a world designed primarily for the public, information becomes a bridge to independence and dignity. For 23 years, we have been building that bridge for
visually impaired individuals through a flagship project, Eyeway, a knowledge-sharing platform that transforms lives. Growing up as a visually impaired person and traveling the length and breadth of our country, I had the opportunity of meeting various people. It came to me very, very clearly. Blindness is not a real problem, it's a mindset. नजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, असली प्रॉब्लम जो है हमारे नजरिया में. So, keeping this in mind, we have launched Project Eyeway as a knowledge resource and use communication to reach out to people. What started as a modest initiative has now evolved into a nationwide movement, touching thousands of lives across India. Our work stands on 5 pillars that shape every initiative, every interaction, and every life we touch. 1. Information dissemination. We believe information is power, especially for those navigating a world not designed for them. Through podcasts, braille publications, audio content, and digital resources, we create accessible knowledge that informs, educates, and inspires. With the initiatives like Nazariya and radio program Roshni Ka Karma. इस टेलीविजन स्क्रीन के उस पार आप इस वक्त मुझे देख सकते हैं या सुन सकते हैं, मगर मैं ना आपको देख सकता हूं ना सुन सकता हूं. हाँ, महसूस जरूर कर सकता हूं. सिर्फ 10 सेकंड के लिए आप अपने और मेरे बीच एक पर्दा डाल कर देखिए. अब आप भी मुझे नहीं देख सकते, तो क्या मेरा वजूद या आपकी जिंदगी रुकी? नहीं. National Helpdesk. Our helpdesk handles over thousands of calls each year, offering personalized guidance on education, employment, rights, and daily living. Through our trained counselors, we provide not just information, but tailored support and practical solutions. We work closely with government bodies, NGOs, and individuals, referring people and collaborating with partners to ensure timely and effective interventions for persons with visual impairments. 3. Advocacy against discrimination. Systemic barriers require systemic solutions. Our advocacy work pushes for policy change and equal rights. From educational institutions to workplaces, from public transport to digital spaces, we fight to make inclusion not just a privilege but a fundamental right. 4. Sensitization and awareness. True change happens when society evolves together. Our workshops transform perspectives one mind at a time. By helping people see differently, we create allies and champions for an inclusive world where visual impairment is merely a characteristic, not a limitation. 5. Training and capacity building. To create lasting change, we build strong foundations. Our capacity building initiative strengthens both our internal teams and external partners. Behind every statistic is a story. Meet some of the individuals whose lives have been transformed through our work. मेरा नाम बापी मंडल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ए डेप्यूटी मैनेजर वर्किंग. आईवे एक ऑर्गेनाइजेशन है. ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे बहुत तरीके से हेल्प किए हैं for preparing competitive exams and to know the government guidelines, those regulations, and it has helped me, given me and way to read, suggest me multiple books, sites, websites, and various apps. Eyeway has led me to such a way to know all these things. And today I have achieved my goal. Thanks to Eyeway. मैं आईवे से 10 सालों से जुड़ा हूँ.
न्यू से मार्केट कर रहा हूँ। आईवे ने मुझे बहुत सारी जानकारियां देकर आत्मनिर्भर बनाया, जिससे मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो पाया। मैं 2019 में आईवे के साथ जुड़ा। आईवे के साथ जुड़ने के बाद में मुझे बहुत सारी मदद मिली। मदद मिलने के बाद में इन्होंने मुझे बताया पढ़ाई के बारे में। मुझे धीरे धीरे पता लगा पढ़ाई कितनी जरूरी है। तो पहले मैं सोचता था कि ब्लाइंड लोग पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन मुझे आईवे ने इतना बताया कि ब्लाइंड लोग सब कुछ कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। फिर मुझे इन्होंने बताया एनवाइस के बारे में। जब मैं एनवाइस के साथ जुड़ाव किया तो मैंने एनवाइस में एडमिशन लिया और आज मैं जो कुछ हूँ सब इनकी बदौलत में हूँ। और थैंक यू आईवे। We don't just respond, we transform. Every voice matters. Every story counts. Every barrier can be overcome with right information, support and capable partners. Because when you empower one person, you empower a community. When you train one organization, you strengthen an entire ecosystem. Every blind person is potentially part of the human resource of our country, and we must invest in them rather than just providing for them. This was about it, and even after 23 years of foundation, we continue to work firmly on the path of service, inclusivity and equality. Now I would like to invite George sir and our help desk counselor, Mr. Deepak Agrawal, to come on stage for a very short interaction. ये बहुत ही क्विक एंड जल्दी होगा क्योंकि मैं कम बोलता हूँ, दीपक भी बहुत कम बोलते हैं। तो उम्मीद है कि हम लोग जो 10 मिनट में किया जा सकता है हम 2 मिनट में कर लेंगे। सो दीपक अग्रवाल जो है हमारे हेल्प डेस्क काउंसिल का हेल्प डेस्क टीम का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है और कई सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सो दीपक विल बी playing a major role in the help desk at the Kirori Mal College, CDRT. So, Deepak, आप कब से दृष्टिबाधित हैं और ये दृष्टिबाधित कैसे हुआ? नमस्कार जी, नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा सर कि मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट रहा हूं और मैंने यहाँ से बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट किया था। एंड व्हेन आई वाज 35 इयर्स ओल्ड मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी और जब डायग्नोस किया तो पता चला कि मुझे आरपी का प्रॉब्लम है, दैट इज रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जी। तो आरपी के आप एक और पेशेंट रहे हैं एंड आप भी मेरे जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक पूर्व छात्र हैं, राइट। सो जब आपको मालूम पड़ा कि आप दृष्टिबाधित है तो आपके पास क्या साधन था जिसको आपके गाड़ी वापस, जिंदगी का गाड़ी जो है वापस पटरी पर लाए? जब मुझे पता चला सर कि मैं ब्लाइंड हो गया हूँ और मुझे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो एट दैट टाइम आई वाज शॉक्ड एंड आई वाज इन डिप्रेशन। तो मुझे पता चला कि ब्लाइंडनेस के चलते भी कुछ लोग जो है विजुअली इम्पेयर्ड आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। तो जब मैं नेट पे चेक कर रहा था तो मुझे पता चला कि आईवे एक हेल्पलाइन है जो कि दृष्टि वाले लोगों के लिए मदद करती है, उनको एम्पावर करने में और ब्लाइंडनेस के साथ कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है इसके लिए गाइडेंस देती है। तो मैंने आईवे को कनेक्ट किया, आईवे के काउंसलर ने मुझे मोटिवेट किया और गाइडेंस दिया। साथ ही साथ मुझे बताया कि एनएबी दिल्ली में आप कंप्यूटर सीख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं यूजिंग स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर। तो मैंने वहां से कंप्यूटर की ट्रेनिंग लिया, स्मार्टफोन चलाना सीखा यूजिंग टॉकबैक
एंड मोबिलिटी की ट्रेनिंग, जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाया। बहुत बढ़िया। तो अभी आप आईवे में कार्यरत है, तो आईवे हेल्प डेस्क में आप किस तरह के सवाल अक्सर डील करते हैं? व्हाट आर द काइंड ऑफ challenges that blind people from different parts of India आपको कॉल करते हैं और पूछते हैं? कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आईवे का मैं शुक्रगुजार हूं कि आईवे ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी काउंसलिंग करने की, और आज मैं अपने दृष्टि वाले भाइयों के बीच में काउंसलिंग कर पा रहा हूं, उनको गाइड कर पा रहा हूं। मुझे जो क्वेरीज आती हैं जस्ट लाइक सोशल बेनिफिट्स के लिए, लाइक यूडीआईडी कार्ड, डिसेबिलिटी पेंशन, करियर गाइडेंस, या फिर असिस्टिव डिवाइसेस को लेकर के, जिसको हम बताते हैं कि किस तरह से एक विजुअली इम्पेयर्ड अपने जीवन में उनको यूज करके इंडिपेंडेंट बन सकता है। तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है काउंसलिंग करके, और मैं गाइड कर पा रहा हूँ, मुझे इस चीज की खुशी है। तो आप अभी टेलीफोन पे बात करने के बाद यू आर गोइंग टू मीट पीपल फेस टू फेस, आमने सामने बैठ के आपसे सवाल पूछा जाएगा और आपको जवाब देना होगा। तो आपका मैसेज क्या है? ये किरोरी मल कॉलेज है, यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेज के छात्र बैठे हैं, वो सही कह रहा हूँ? यहाँ पर अलग अलग कॉलेज के छात्र हैं? yes, sir! आपने सुन लिया? तो ये लोग आएंगे आपके पास, तो इन लोगों को अगर आप संक्षेप में क्या कहना चाहते, क्या उम्मीद रख सकते हैं? तो कैन यू जस्ट इन 2 lines 3 lines टेल अस व्हाट? किरोरी मल कॉलेज का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमें मौका दिया कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में मैं पहुंच पाऊं और उनको काउंसलिंग कर पाऊं। साथ ही साथ एक हथियार है जिसको मैं देना चाहूंगा कि उनका यूज करके वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें नंबर 1 करियर गाइडेंस हो गया, सेकंड आपका टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड अदर इंफॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट फॉर देम, जिसे कि वो अपने लाइफ में यूज करेंगे और आगे जीवन में बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच। तो संक्षेप में लड़ने के लिए, जिंदगी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाइए आप लोग, क्योंकि दीपक और उनके बाकी साथियों आपको हथियार देने वाले हैं। जैसे अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, आप लोगों को दुनिया के साथ लड़ना है और जीतना है। तो दीपक है, वो आपको रोशनी देंगे। थैंक यू दीपक। Now I would like to extend my heartfelt gratitude to our Chief Guest, Shri Rajesh Agarwal, Secretary of the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, who joined us online, and our esteemed panelist, Mr. Praveen Prakash Ambastha, Deputy Chief Commissioner for Persons with Disabilities and Chief Vigilance Officer, CCP, Dr. R.P. Chinana, Program Director, Saksham, Ms. Sarita Chand, Founder, Indic AI, Dr. Pankaj Kumar, Assistant Professor, NIDH, Mr. Deepak Agarwal, Counselor, Core Foundation, Mr. George Abraham, CEO for Foundation, and Professor Someshwar Sati, Kirori Mal College. We would also like to extend our deep sense of gratitude to Saksham and Vision Aid for putting up exhibition of assistive devices specially designed for those with blindness and low vision outside the academic auditorium. Ladies and gentlemen, on your way out, please don't forget to take a look out of it, and refreshments are also available. Thank you everyone for joining us. कर दियो जरा से। हाँ 1 सेकंड रुक जाओ। और ले बस 1 मिनट रुक जाओ। Please volunteer together here and help the people who need. कर दो।
नहीं हुआ ना वो अपने आप बंद हो तो हम तो अपना कर तो नहीं, बंद तो करना। हाँ कर दे, बंद कर दे।